So we have seen up to aminoglycosides and non-aminoglycosides, macrolide antibiotics. As the name indicates, macro means little bit more in the size. Macro means बड़ा. Macro means बड़ा. Lights मतलब क्या? Lights मतलब lactone ring. Lights मतलब lactone ring. बड़ा वाला लैक्टोन रिंग जिसमें है ऐसा एंटीबायोटिक. अब बोलेंगे कहाँ पे लैक्टोन रिंग है? देखो ये क्या है? लैक्टोन रिंग है. ये क्या है? ये देखो सबसे बड़ा लैक्टोन रिंग ये है. ये जो रिंग है ये देखो ये इतना बड़ा रिंग है. इसमें क्या है? लैक्टोन. लैक्टोन मीन्स कीटोन. कीटोन है इसमें देखो. सो लार्ज लैक्टोन रिंग हैविंग एंटीबायोटिक दैट इज नथिंग बट द that is nothing but the macrolide antibiotics. Okay, macrolide antibacterial drugs. So actually this is the structure of your erythromycin. Erythromycin जो इरिथ्रोमाइसिन होता है उसका ये स्ट्रक्चर है. इसमें देखो 1 2 3 जो रिंग्स है ऑल आर द लैक्टोन रिंग्स. सबसे बड़ी रिंग में लैक्टोन रिंग ये होती है. बाद में है बाकी का भी. So these are the lactone rings. So that is known as a macrolide. Now it is a structure of erythromycin. Just remember, there is no need to remember the structuring one. Just remember the rest of the points. See, macrolides means structure with large lactone ring. Okay, so these are the macrolide antibiotics. There are numerous examples in this class. There is a erythromycin, there is a azithromycin, there is a roxithromycin, there is a telithromycin, there are few examples. Okay, so we'll see the mechanism of action of these drugs, macrolide antibiotics. So mechanism क्या है कि these drugs are also protein synthesis inhibitor. ठीक है, बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका वो इनहिबिट कर देंगे. सो मैक्रोलाइड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद द 50s राइबोसोमल सब यूनिट. जो फाइनल स्टेप होता है आपका एमआई. आपका पहला स्टेप क्या है? कौन सा भी प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप ही होता है बैक्टीरिया में भी या फिर ह्यूमंस में भी. बैक्टीरिया में क्या होगा? पहला जो डीएनए है उसका उसका रेप्लिकेशन होगा. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. उसके बाद क्या होगा? डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा. सो दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, सो पहले रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका. मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन में. तो बाद में ट्रांसक्रिप्शन का होता है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एमआरएनए बना है या फिर राइबोसोमल आरएनए बना है, ट्रांसफर आरएनए बना है, वो आरएनए क्या करेंगे कि जो आरएनए के ऊपर कोडिंग है, जो अमीनो एसिड जो कोडॉन्स है आरएनए को, वो कोडॉन्स के अगेंस्ट में अमीनो एसिड के लिए अमीनो एसिड जोड़ते जाएंगे. तो ट्रांसलेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है एक्चुअली. सो मैक्रोलाइड विल एक्ट बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का जो स्टेप होता है उसके ऊपर वो एक्ट करते हैं. तो दे बाइंड विद द 50s राइबोसोमल सब यूनिट. यहाँ पे इतना याद रखो कि मैक्रोलाइड्स इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद द 50s राइबोसोम. So aminoglycosides are also inhibiting the protein synthesis, but they used to bind the 30s ribosomes. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स. तो उनमें जो ये होता है, उनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो एटीएस टाइप होते हैं. एटीएस. एटीएस. यस मीन्स यस जो होता है वो यस. यस इज नथिंग बट द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. यस तो एटीएस. एक तो 30s राइबोसोम प्लस 50s राइबोसोम कितना होगा? एटीएस. कुछ एंटीबायोटिक्स 30s राइबोसोम को बाइंड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं, जैसे अपना अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. But these macrolides they used to inhibit the bacterial protein synthesis by binding with the 50s ribosomal subunit, and there interferes with the process of translocation in the bacterial protein synthesis, and their action is nothing but the concentration dependent. So if you increase the concentration, same drug will act a bactericidal. In a higher concentration, same drug will act as a bacterostatic in the low concentration. Means their action is nothing but the concentration dependent action. That is bacterostatic or bactericidal. In the lower amount, these drugs will act as bacterostatic. They will prevent the growth of bacteria. In the higher dose, they will kill the bacteria. It is bactericidal. So remember the mechanism of action. Again, I will repeat. So they will bind to the 50s ribosomal subunit of microsome. They will bind to 50s ribosomal subunit of microbes, and they will inhibit the microbial protein synthesis. Okay, and their action is concentration dependent. There are few organisms they can develop resistance to these macrolides also, like bacteria like cocci. Cocci can develop the resistance by mutations. They will cause result in the decreased permeability and pump it out capacity. So they will decrease the permeability of antibiotic in the cell, and they will increase the pump it out capacity. Pump it out मतलब क्या कि बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया बाहर फेंक देगा उसको.
Now they have anti-inflammatory activity against. So this mechanism is responsible for the antibacterial activity. In addition to antibacterial activity, these macrolides will have anti-inflammatory activity also, and also they affect the neutrophils and inflammatory cytokines. They will decrease the inflammatory cytokines. They will decrease the production of your neutrophils and inflammatory cytokines. As they will decrease this, they will act as an anti-inflammatory also. Then again there is one more action. They are also motilin receptor agonist. They are also motilin receptor agonist. ये motilin receptor क्या होता है? Motilin receptor, they are the receptor responsible for the motility of your intestine. कि आपके इंटेस्टाइन जीआईटी का जो मोटिलिटी होता है, ठीक है ना, पेरिस्टालसिस का मूवमेंट जो होता है, इंक्रीज डिक्रीज कौन करता है? मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर होता है. तो मोटिलिन रिसेप्टर, दे विल एक्ट एज अ मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट. दे विल इंक्रीज द peristaltic movement. They will increase the motility of your GIT, and that's why they will cause diarrhea. Remember, this was also a question. ये question as it is आया था GPAT में कि erythromycin will cause diarrhea by acting on so motilin receptor. ये मतलब मैकेनिज्म याद रखो, ये याद रखो. देन उसके जो मेंबर्स है, इसके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं मैक्रोलाइड के. फ्यू ऑफ देम आर यूज्ड क्लिनिकली. इरिथ्रोमाइसिन, फर्स्ट मेंबर इज इरिथ्रोमाइसिन. इरिथ्रोमाइसिन ये आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में. इरिथ्रोमाइसिन का टैबलेट, इरिथ्रोमाइसिन अभी कोरोना में बहुत ज्यादा चलता था. एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा चलता है. एजिथ्रोमाइसिन उसका भाई है. सो इरिथ्रोमाइसिन it is a fermentation product of fungus Streptomyces erythrus. Streptomyces erythrus नाम का फंगस है, उससे इरिथ्रोमाइसिन ऑप्टेन किया गया है. सो erythrus for erythromycin. Streptomyces, it is active against various organisms like gram positive cocci. अभी कोकाई क्या होता है, बेसिले क्या होता है, रॉड क्या होता है, ये सब आप सिंपल थिंग्स है, ये सब आप देख सकते हो माइक्रोबायोलॉजी के बुक में. उन्होंने शेप के साथ एक्सप्लेन किया है कोकाई क्या है, बेसिला क्या है. सो दे आर active against various gram positive cocci. Then penicillin resistant cocci active against again the streptococci, pneumococci, Neisseria H influenzae, Corybacterium diphtheria, then mycoplasma and rickettsia. Rickettsia is obligate parasite. These drugs are effective in the penicillin resistant staphylococcus aureus. Penicillin resistant staphylococcus का infection होगा आपको, तो you can use these drugs, erythromycin, azithromycin, peroxythromycin, like that. Absorption, distribution, metabolism of these macrolides. So they are absorbed from basic environment, means they are absorbed from your intestine. Okay, intestine में क्या होता है? Basic environment. So it is a partially destroyed because it is a partially destroyed in the gastric acid. Therefore, entry coated tablet they are employed, or their ester forms are advocated. Means ये gastric acid इसको destroy करता है, lactone ring को open करता है. तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपको इसको क्या करना है, एंट्री कोटिंग करना है ताकि गैस्ट्रिक एसिड में रिलीज ना हो. तो आप जाएगा इंटेस्टाइन में, तब वहां पे वो एब्सॉर्प्शन होगा. या फिर क्या करो, उसका इस्टरिफिकेशन करो, जैसे इरिथ्रोमाइसिन ओस्टियोलेट, इरिथ्रोमाइसिन का ईस्टर बना के यूज किया. ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, लेकिन ड्रग का हाइड्रोलिसिस नहीं. इरिथ्रोमाइसिन इज रेडिली डिफ्यूजेस इनटू बॉडी फ्लूइड बट CSF लेवल्स. अभी इरिथ्रोमाइसिन जो है, जो बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स में उसका अमाउंट मिल जाएगा आपको, डिफ्यूज होता है वो, लेकिन ब्रेन में नहीं जाता, वो CSF में नहीं जाता. Most of the drug is metabolized by liver and it is excreted through kidney. Now, what are the adverse reaction of this macrolide antibiotics? So, I am just taking one example of erythromycin that is used, that is the prototype of this macrolide. Then adverse reactions like allergic reaction, including drug fever, dermatitis, urticaria, lymphoadenopathy. आपका lymph gland है वो बढ़ जाएगा, उसका साइज. lymphoadenopathy, hearing dysfunction, that is ototoxicity again. कोलेस्टेटिक जॉन्डिस मतलब यहाँ पे आपका जो बाइल एसिड है ब्लड में बढ़ जाएगा, that is cholestatic jaundice. Then nausea, vomiting, diarrhea, epigastric pain. These are the adverse effects. Now erythromycin istolate causes acute cholestatic hepatitis. Erythromycin osteolate causes cholestatic hepatitis. Okay, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था. And because of that property, it is used in the cornictus, especially in the pregnant women and pregnant females. So other sort of erythromycin are safe, but this erythromycin osteolate can cause acute cholestatic hepatitis. Now, therapeutic uses of your macrolide antibiotics. They are effective in the penicillin-resistant staphylococcus infection. So they are the substitute for penicillin. अगर पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट से किसी का इन्फेक्शन क्योर नहीं हो रहा है, उसमें आप मैक्रोलाइड यूज कर सकते हो. एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेनिसिलिन,
in the patient allergic to the penicillin or microorganism who developed the resistance to penicillin. मतलब पेनिसिलिन के अगेंस्ट में किसी को एलर्जी है पेनिसिलिन का या फिर पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस हो गया है बैक्टीरिया को, तो उसमें आप ये कर सकते हो. माइकोप्लाज्मा क्लैमिडियल इन्फेक्शन. In case of mycoplasma and chlamydial infection, erythromycin is the drug of choice in the treatment of mycoplasma pneumonia. Erythromycin is a drug of choice in treatment of mycoplasma pneumonia. It should be used. It should be used in the clinical pneumonia urogenital infection. Should not be used in the clinical pneumonia and urogenital infection during pregnancy. Pregnancy में use नहीं करना है क्योंकि ये cholestatic jaundice करता है. So you should not have to use this erythromycin in case of clinical pneumonia. Clinical pneumonia means that is caused by influenza, and mycoplasma pneumonia means that is caused by fungus. क्लिनिकल मतलब नॉर्मल निमोनिया क्यों होता है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है. बैक्टीरिया की वजह से नॉर्मल निमोनिया होता है. नॉर्मल निमोनिया में यूज नहीं करना है इसको, या फिर प्रेग्नेंट वुमन में यूज नहीं करना है. बाकी आप माइकोप्लाज्मा निमोनिया में कर सकते हैं. माइकोप्लाज्मा मतलब ये फंगस से होता है. अगेन whooping cough. Erythromycin is a drug of choice in case of whooping cough. ये क्वेश्चन एज इट इज आया था बहुत सारे एग्जाम में. Rhodiola pertussis is the causative organism for the whooping cough. टांगिया खोखला जिसको बोलते हैं मराठी में टांगिया खोखला. Whooping cough मतलब टांगिया खोखला. Whooping cough, in case of whooping cough, it is a drug of choice. It is caused by organism known as a Rhodiola pertussis. And again diarrhea due to Campylobacter jejuni. Diarrhea due to Campylobacter jejuni. तो ये कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो आपके जेजनम जो होता है इंटेस्टाइन का इलियम जेजनम, उसमें ये पाया जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, डायरिया हो जाता है. डायरिया ड्यू टू कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी. So erythromycin is again used in this. Erythromycin is the second drug of choice for fluoroquinones. It is a second drug of choice. मतलब ये ना पहले क्या करो आप फ्लोरोक्विनोन यूज करो, अगर उससे नहीं कंट्रोल हो गया तो फिर erythromycin यूज करो. ये सेकंड चॉइस है. Then Spiramycin is a kind of macrolide again. So it is used in the, it is the drug of choice for treatment of toxoplasmosis in the pregnancy. Legionnaires disease, macrolide like macrolides, tetracycline and fluoroquinones, they are combined they are effective, but you can use either macrolides, tetracycline or fluoroquinones. Leptopyrosis also, in case of leptopyrosis you can use erythromycin. And erythromycin is also effective in the sexually transmitted diseases like syphilis and gonorrhea. But remember, the drug of choice, erythromycin is drug of choice in case of whooping cough. Erythromycin drug of choice किसमें, whooping cough में. Then it is also used in the diarrhea caused by Campylobacter jejuni, and it is used in the chlamydia mycoplasma infection. It is a drug of choice again in a mycoplasma pneumonia, not in a clinical pneumonia, and not used in a urogenital infection during pregnancy. Pregnancy अगर है उसमें infection हो गया. Individual macrolide antibiotics, ठीक है. It is individual macrolide antibiotics. So we have seen about the erythromycin. Now other members of same family, rohamycin, azalides. इसमें azalides में आपका सब आता है, जैसे roxithromycin, azithromycin and clarithromycin. Rohamycin means oleandomycin और tetraacetyl oleandomycin. Rohamycin में आता है oleandomycin, tetraacetyl oleandomycin. These are also macrolide antibiotics, but action is weaker than the erythromycin. Erythromycin से इसमें action जो है इसके erythromycin से कम है. Then Spiramycin effective in the treatment of toxoplasmosis. जो ऊपर वाली स्लाइड में Spiramycin देखा था आपने, that is a derivative of rosamycin, and rosamycin itself is a macrolide family. Macrolide में rosamycin भी आता है. उसके जो ड्रग है ओलिंडोमाइसिन एंड टेट्रास्टिल ओलिंडोमाइसिन. Spiramycin is also rosamycin. Remember, Spiramycin is a treatment effective in treatment of toxoplasmosis. Then new macrolides, अभी ये सब यूज नहीं करते. It is the rarely used. Olintromycin, tetrastyl olintromycin, Spiramycin, they are rarely used now. What kind of macrolides are used? Azalides. New macrolides are there. They are known as azalides. Same is in the derivative. Their advantage over erythromycin: resistant to acid hydrolysis, absorption is better and gives better tissue level, having longer duration of action. तो erythromycin है, उसके एडिशन में ये जो न्यूअर एंड माइक्रोलाइड्स है उसका एडवांटेज क्या है? erythromycin क्या है कि it is susceptible to destroy in the stomach. एसिड में क्या होता है, erythromycin का डिस्ट्रक्शन होता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को? Either you have to formulate in the enteric coated formulation, or you can use
that ईस्टर फॉर्म्स ईस्टरिफिकेशन करना पड़ेगा या फिर आपको क्या करना पड़ेगा एंट्री कोडिंग करना पड़ेगा नाउ and also erythromycin was not having better tissue levels. CSF में level नहीं था उसका ऐसा. New macrolides they have advantage over erythromycin. Resistant to acid hydrolysis, absorption is better, gives better tissue levels. Again, having longer duration of action. These are the advantages of new macrolides. So what are examples of these? Oxythromycin, azithromycin and clarithromycin. Azithromycin you might have seen. अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया थ्रोट इन्फेक्शन या फिर कुछ ठीक है खांसी सर्दी खांसी तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं सो एजिथ्रोमाइसिन इज नथिंग बट द न्यूअर मैक्रोलाइड azalides so these three comes under the category of azalides now we'll see roxithromycin obviously the spectrum of activity of these azalides they will be higher than that of erythromycin so spectrum of activity and uses are similar to erythromycin but they are rapidly absorbed that is 50% food interfere with the absorption most of the drug and it is excreted in the feces. Adverse effects are similar to erythromycin but claimed to be better tolerated and it is long acting and acid stable. एडवांटेज होती है एजिथ्रोमाइसिन तो इसका एक टैबलेट आता है रॉक्सी 150 एजिथ्रोमाइसिन का रॉक्सी 150 इसका नॉर्मल डोज होता है 150 मिलियन एजिथ्रोमाइसिन का ठीक है रॉक्सी 150 नाम का टैबलेट आता है एरिथ्रोमाइसिन का टैबलेट आता है आपका इरिथ्रो 500 mg का डोज रहता है उसका एजिथ्रोमाइसिन का दो फॉर्मुलेशन है जी 250 एंड आजी 500 250 mg एंड 500 mg का फॉर्मुलेशन होता है उसका एजिथ्रोमाइसिन बहुत सारा ब्रांड नेम है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं एजिथ्रोमाइसिन जिथ्राल जी ब्रेक्स एक्सेट्रा एजिथ्रोमाइसिन azolite differ chemically from macrolide group and this lactone ring is contain nitrogen in so जो lactone ring दिखाया था मैंने बाकी जो macrolides है उसमें नाइट्रोजन नहीं था लेकिन azithromycin के lactone ring में नाइट्रोजन है so azolite it is a azolite category drug and chemically differs from other macrolide group this lactone ring consists of a nitrogen group spectrum is similar to erythromycin and some additional gram negative organism is little bit extended spectrum. The drug is active at pH 7.4 and above. In addition, it is used in the treatment of avian complex AIDS. Avian complex virus जो होता है AIDS उसमें यूज करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज करते हैं एजिथ्रोमाइसिन प्रोवाइड सर्विक्टिस मतलब जो गर्ल्स में सर्विक्स होता है उसका अगर इन्फेक्शन हो गया उसमें यूज करेंगे यूरोथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें यूज करेंगे क्लैमिडियल इन्फेक्शन ऑल ड्यू टू क्लैमिडियल मतलब ये एवियन कॉम्प्लेक्स एड्स पेशेंट एवियन कॉम्प्लेक्स जो वायरस होता है एवियन कॉम्प्लेक्स का इन्फेक्शन जो होता है वायरस नहीं सॉरी एवियन कॉम्प्लेक्स का इन्फेक्शन होता है जो एड्स पेशेंट में होता है क्या होता है कि एड्स पेशेंट का क्या है कि इम्यूनिटी बहुत ही कम होता है जिसको एड्स पेशेंट है नाम ही है ना एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम so in that patient there is deficiency of immunity so that's why they are vulnerable to infections and in that infection you get Asian complex infection used to treat the Asian complex infection in the AIDS which is respiratory tract infection cervicitis urethritis and all these all due to chlamydial infection this part is clarithromycin it is again azolide derivative of macrolide class chemically different from erythromycin only in a methylation of oxyl group at 6th position स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें जो है क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन में ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है there is only one methylation it has active against Microbacterium ovium MAC Microbacterium ovium complex H influenza N Neisseria gonorrhea hemophilia then chlamydia now this clarithromycin is metabolized to one active metabolite known as a 14 hydroxyclarithromycin क्लैरिथ्रोमाइसिन का मेटाबॉलिज्म होता है 14 हाइड्रोक्सीक्लैरिथ्रोमाइसिन व्हिच इज आल्सो एक्टिव मींस इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है एक मैक्रोलाइड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन एच पाइलोरी इन्फेक्शन मतलब क्या कि एक एच पाइलोरी नाम का वायरस होता है पाइलोरी वो क्या करता है वो इन्फेक्ट करता है आपके स्टमक को इन्फेक्शन करेगा वो और उसके इन्फेक्शन की वजह से जो म्यूकोजल लेयर ऑफ स्टमक है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और वहाँ पे अल्सर बन जाता है अल्सर ड्यू टू एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो इन दैट केस फॉर इरेडिएशन ऑफ दिस इन्फेक्शन use clarithromycin whenever we see the anti-secretory agent or antacid agent at that time I will explain this why macrolides are used so this clarithromycin is used in the case of pylori infection macrolide of choice for H pylori infection तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following macrolide is a
of choice in case of H. pylori infection. Erythromycin, remember. In the upper and lower respiratory tract infection, sinusitis, whooping cough, pneumonia, skin infection due to Erythromyces pyogenes or S. aureus. So it is used in the respiratory tract infection, also upper and lower RTI. Whooping cough, then atypical pneumonia. Then it is also used in the skin infection due to Erythromyces pyogenes. S. aureus also. Remember macrolide of choice in the H. pylori metabolized to protein hydroxychloroethylmycin. Okay, there is another one known as a telithromycin. This is a new drug. Telithromycin. Erythromycin is the first ketorolide antibiotic related to erythromycin, similar in the spectrum, but it is a potent enzyme inducer. Potent microsomal CYP3A4 enzyme inducer. So अगर ये ड्रग दिया और उसके साथ में दूसरा ड्रग दिया, दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा. So those are the drug which can induce the microsomal enzymes. Those kind of drug which will induce the microsomal enzymes, they can accelerate the metabolism of drug which is being concurrently used. जो एंजाइम इंड्यूसर ड्रग होते हैं उसके साथ में अगर कोई दूसरा ड्रग देंगे उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी करेंगे, वो थेरेपेटिक लेवल मिलेगा इन्हें आपको. एंजाइम इनहिबिटर है, फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है, तो वो क्या करेंगे, किसी ड्रग जो कंकरेंटली यूज कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म उसका भी कम करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, उनका थेरेपेटिक लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट कीटोलाइड related to erythromycin. It is a potent inducer of CYP3A4. Drug reaction includes blurred vision, diplopia, myasthenia gravis. Tacrolimus. Actually, this tacrolimus is a in the cancer. Tacrolimus is a drug used in the cancer. Immunomodulator. Also a macrolide antibiotic. Tacrolimus, it is a macrolide antibiotic, but it is not used as an antibiotic. So it is used as an anti-cancer agent. Tacrolimus, etc. The next category known as a lincosamide. Category of antibiotic, they are nothing but the lincosamide. So in that case, lincomycin, clindamycin, vancomycin, these are the lincosamide category. Clindamycin यूज करते हैं, लिंकोमाइसिन तो ज्यादा यूज नहीं करते, क्लिंडामाइसिन है यूजफुल और आपका वैंकोमाइसिन भी यूज होता है. फर्स्ट विल सी लिंकोमाइसिन. सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस lincolenesis. Bacteriostatic in nature, acts by interfering with the protein synthesis and has cross resistant to the macrolides. मतलब क्या है क्रॉस रेजिस्टेंट? synthesis इन्वेट करता है. ओके, क्रॉस रेजिस्टेंट टू द मैक्रोलाइड मतलब अगर आपको मैक्रोलाइड को अगर रेजिस्टेंट है आपके बॉडी में, आपको इन्फेक्शन हो गया, मैक्रोलाइड इनइफेक्टिव है, ये ड्रग भी इनइफेक्टिव होगा. एज अ क्रॉस रेजिस्टेंट, टॉलरेंस, क्रॉस रेजिस्टेंस, ये टर्म्स आपको आना चाहिए. क्रॉस रेजिस्टेंट टू द macrolides. The first drug reaction includes depletion of neovascular transmission, may cause pseudomembranous colitis, jaundice in addition to adverse effect. मतलब ये तो है it will cause depletion of neuromuscular transmission, cause pseudomembranous colitis, jaundice. Common adverse reaction was the nausea, vomiting, diarrhea, allergic reaction, skin, urticaria वगैरह वो सब common है. As an alternative to penicillin or erythromycin, effective in a chronic osteomyelitis with good penetration in the bone. Myelitis मतलब infection of bones. Infection अगर हो गया तो उसमें ये effective है लिंकोमाइसिन. क्लिंडामाइसिन मैक्सिमम आपने देखा होगा जिसको भी एक्ने है, एक्ने जिसके भी फेस पे बड़े बड़े ये इन्फेक्शन के फोड़े हैं, गर्ल्स में कॉमनली होता है ये लिंक एक्ने वल्गैरिस. क्लिंडामाइसिन. 7-chloro-7-oxylincomycin is a semi-synthetic derivative of lincomycin. It is a bacteriostatic at the low concentration, but bactericidal at a higher concentration. Adosipin include similar to the lincomycin. It is used in the reflux infection of anaerobic infection along with the aminoglycoside. Peritonitis, superinfection with Clostridium difficile if occurs. It should be immediately after treating with the metronidazole. इन्फेक्शन अगर हो गया आपका, इसका यूज करके क्या होता है कि इसका यूज करेंगे तो सुपर इन्फेक्शन होता है. किसका? सुपर इन्फेक्शन विद क्लोस्ट्रिडियम डिफिकली. अगर होता है तो आपको मेट्रोनिडाजोल का इमीडिएटली यूज करना है. वैंकोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटलिस. देखो इसका सोर्स भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेगा आपको. फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटलिस
It is a bactericidal drug, acts by inhibiting the cell wall synthesis. Remember, cell wall synthesis inhibitor. The protein synthesis inhibitor. Binds to the terminal dipeptide D-ala. एक जो सेल वॉल होता है उसमें क्रॉस लिंकिंग होता है डी एलानिन इस लिंकिंग होता है. It binds the terminal dipeptide D-ala and D-ala sequence of peptidoglycan units of the cell wall. Prevent its release from bacterioprenol lipid and the cross linking. It will act on a cell wall. So it will lead the cell wall synthesis. By the terminal dipeptide D-ala. इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था. D-ala सीक्वेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है उसमें जो डाइपेप्टाइड होता है. डाइपेप्टाइड मतलब टू पेप्टाइड्स. D-ala सीक्वेंस जो होता है. D-ala मतलब D-alanine. बस सब पेप्टिडोग्लाइकन prevents its release from bacterioprenol and prevents the cross linking of the cell wall. Reaction includes Redman syndrome. इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है. रेडमैन सिंड्रोम इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन. ठीक है. सिंड्रोम लोकल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जनरलाइज्ड रिएक्शन. मतलब रेडमैन सिंड्रोम मतलब क्या होगा कि अगर वैंकोमाइसिन लेंगे आप तो आपका पूरा बदन लाल हो जाएगा. ठीक है. नथिंग बट द रेडमैन सिंड्रोम लोकल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जनरलाइज्ड रिएक्शन. ओके. Then also auditory damage. So adverse reactions of vancomycin, Redman syndrome and auditory damage. So it is used in the staphylococcal endocolitis. Staphylococcal enterocolitis. मतलब स्टेफिलोकोकस का इन्फेक्शन होगा आपके इंटेस्टाइन में. तो pseudomembranous colitis ये भी उसी का टाइप है. Then because of biotoxins of Clostridium difficile. Clostridium difficile जो होता है वो टॉक्सिन रिलीज करता है. तो उस टॉक्सिन की वजह से आपको वहाँ पे इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन में. ठीक है. उसको बोलते हैं. वैंकोमाइसिन में भी यूज्ड इन द पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन. अगर कोई सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन में कोई रेजिस्टेंट आ गया आपको तो उस और इन्फेक्शन है आपको तो उसमें एक वैंकोमाइसिन यूज कर सकते हैं. देन टेकोप्लानिन प्रोड्यूस्ड बाय actinoplanes ticomyticus. Ticoplanin similar to vancomycin in all aspect of pharmacology. vancomycin की जैसे होता है. Sodium fusidate. It is a next antibiotic known as a fusidine. Sodium fusidate. It is a fusidic acid derivative. Sodium fusidate or fusidine. Okay. Sodium fusidic acid derivative and it is a steroidal antibiotic. Remember इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है. One of the following is a steroidal antibiotic. So sodium fusidate or fusidine or it is a fusidic acid derivative and it is a steroidal in nature. ठीक है. याद रखो steroidal antibiotic is nothing but the sodium fusidate. Sodium salt of fusidic acid obtained from parasitic fungus known as a Fusidium cocainum has steroidal structure sometimes called as a steroidal antibiotic. मैंने बोला था it is known as steroidal antibiotic. It has a steroid structure. Steroid structure क्या होता है? साइक्लोपेंटेनॉल पर हाइड्रोपेनेथ्रिन प्लस एक बेंजीन. चार स्ट्रक्चर होते हैं. चार बेंजीन. So bacterial and antibiotic acts as a synergistically with the penicillins and macrolides. So what is the use of this fusidic acid? So what is the adverse effect? So it causes epigastric pain, hepatic dysfunction, may aggravate the pelvic ulcer and exert a catabolic effect. Along with the common adverse reaction. Common means why skin reaction by intolerance, urticaria, then nausea, vomiting, diarrhea. So it is used in the staphylococcal infection and in the locally use करते हैं maximum उसका. Next one is a bacitracin. It is a polypeptide antibiotic. Bacitracin is a polypeptide antibiotic obtained from Bacillus subtilis. याद रखो bacitracin, Bacillus subtilis. Similar to penicillin in the spectrum. मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ही ज्यादा एक्ट करेगा. ठीक है. Act by inhibiting the cell wall synthesis at the step earlier than penicillin. याद रखो कि cell wall synthesis inhibitor है ये भी. Nephrotoxicity, acute tubular necrosis and anuria. These are the adverse effects.
nephrotoxicity, acute tubular necrosis, anuria. Anuria means absence of urine. Polyuria means excess of urine. Topical allergic reactions. It is used in the topic. It is used as a topical in the antiseptic creams. So bacitracin इसका topical cream आता है. Sodium fusidate का भी cream ही आता है. ठीक है. Then next one is a linezolid. This is very important. So it is oxazolidine derivative. Oxazolidine, oxazolidine dione, oxazolidine dione derivative. Linezolid means oxazolidine dione derivative. So it is a bacteriostatic agent against Staphylococcus and Enterococci, bactericidal against the Streptococci, and main advantage is active against the E. faecium and MRSA, means methicillin resistant Staphylococcus aureus, MSRA infection and resistant to vancomycin. मतलब vancomycin resistant Staphylococcus aureus. There are two terms, MSRA and VRSA. ठीक है, MRSA एंड VRSA. MRSA में क्या, MRSA आपने पेनिसिलिन में देखा है, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये हो गया MRSA. और दूसरा एक टर्म है VRSA, मतलब V मतलब वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस. So this linezolid is very much important because it is the antibiotic only. Which antibiotic? This is the antibiotic you can use in the patient who is resistant to the penicillins as well as vancomycin. So it is again effective in the effective against the Staphylococci, Enterococci bacteria. It is bactericidal against the Streptococci. The main advantage of this linezolid is it is effective in the MRSA, that is methicillin resistant Staphylococcus aureus infection, and also vancomycin resistant infection. Now, what is the mechanism of action of this drug? So, it acts on a 23S fraction of 50S ribosome and interfere with the formation of ternary complex. Formyl methionine tRNA 70S complex. वही ternary complex, वही ternary complex जो बनता है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसमें solid distorts tRNA binding site. ये डिस्टर्ब करेगा, डिस्टोर करेगा, तोड़ देगा, overlapping with the TSN30 ribosome and stop the protein synthesis and gives the initiation. It acts by preventing the formation of 70S ribosome complex. ठीक है, ये सब सिंपल मैकेनिज्म है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं. आप इतना याद रखो कि it will bind to the ribosome and it will bind to the ternary complex and it will inhibit the protein synthesis. इतना याद रखो, बस हो गया आपका. And this is a unique binding site of linezolid to the bacteria. ये क्या है कि यहाँ पे दूसरा कोई एंटीबायोटिक बाइंड नहीं होता ये साइट पे. यूनिक बाइंडिंग साइट of linezolid to the bacteria and that's why development of resistance or cross resistance is not there. मतलब अगर पेनिसिलिन को रेजिस्टेंट है तो इसको रेजिस्टेंट नहीं है क्योंकि ये अलग बाइंडिंग साइट पे एक्ट होता है. Adverse reaction includes the common adverse reaction like nausea, vomiting, diarrhea, then intolerance, skin reactions. Rarely bone marrow suppression. Bone marrow suppression करेगा तो जो आरबीसी है वो भी कम होगा, जो मतलब न्यूट्रोपेनिया होगा, है ना, aplastic anemia होगा, ल्यूकोपेनिया. देन इट इज अ माओ इनहिबिटर, जो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं जैसे टॉलकैपोन, एंटाकैपोन, है ना, जो मैंने बोला था आपको, माओ ए इनहिबिटर्स, माओ बी इनहिबिटर्स. तो linezolid is an antibiotic which is also a MAO inhibitor. Then uses expensive drug. It is an expensive drug and should be reserved for the treatment of well documented serious vancomycin resistant infections. Vancomycin resistant enterococcus and staphylococcus aureus infection. Okay, vancomycin resistant enterococcus infection and vancomycin resistant staphylococcus aureus infection. याद रखो linezolid. Next part is a tetracyclines. New class of antibiotics, that is a tetracycline. उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा. Tetracyclines क्या होते हैं? Now, as the name indicate, there is a tetra means 4, cyclines means cyclic ring. There are 4 cyclic ring. So these are the family of compound having common structure and activity. They have naphthalene ring nucleus made up of a partially unsaturated cyclohexane rings or radical called as a tetracycline. नेप्थेलिन, 2 नेप्थेलिन रिंग. नेप्थेलिन मतलब क्या, नेप्थेलिन रिंग में क्या है कि 2
फिनोल रिंग अगर एक साथ में आ गए, सॉरी 2 बेंजीन रिंग अगर एक साथ में आ गए तो उसको बोलेंगे नेप्थेलिन, और 2 नेप्थेलिन रिंग अगर आ गए तो उसको बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन. सो इट इज अ स्ट्रक्चर. ओके, सो सी रिंग 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, 4 रिंग है, ठीक है ना. सो इसमें का जो हाफ पार्ट है उसको बोलते हैं नेप्थेलिन, ठीक है. एक जो पार्ट है उसका उसको बोलते हैं बेंजीन. सो they are nothing but the tetracycline. Tetra means 4, cycline means 4. Okay. So these are the tetracyclines. When we will discuss the chemistry, I will tell you why there is a there is a formation of complex of tetracycline with the metals. क्यों होता है, और what is the Epi tetracycline, what is the epimerization of tetracycline, at that time I will tell you. Now just try to understand the structure. Okay, called as tetracyclines. Now we'll see tetracyclines. So first member of tetracycline is a chlorotetracycline, was isolated from Streptomyces aureopiscens. Streptomyces aureopiscens. Then oxytetracycline was isolated from Streptomyces remosus. Remember Streptomyces species से बहुत सारे एंटीबायोटिक आइसोलेट किए, ठीक है. Chemically they are naphthalene derivative and made up of a fusion of 4 partially unsaturated cyclohexene radicals, therefore known as the tetracyclines. They will have a yellow color and they are acid stable, slightly bitter compound, and they are sparingly soluble in the water. Now spectrum of activity. So they are a bacteriostatic and broad spectrum antibiotic. They are effective against gram positive, gram negative certain fungi, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma, Actinomycosis, Amebia, Entomobia histolytica, then spirochete like Tripoma pedalium. So spirochete like Tripoma pedalium, it is a causative organism for syphilis. Okay. So that's why these drugs are useful in the gram positive, gram negative cocci infection, certain fungi infection, then chlamydia infection, mycoplasma, amebia, antiamoeba histolytica, then trepidopedilum. Obviously इसके बेसिस पे उसका यूज होगा, है ना. So mechanism of action of this tetracycline. Antibiotic is transported by active transport in the bacterial cell wall, which is absent in the mammalian cell. ठीक है. तो आपको ये क्वेश्चन आया होगा दिमाग में आपके, सर जितने भी एंटीबायोटिक है वो सब बैक्टीरिया को क्यों मार रहे हैं, मतलब आपने को क्यों नहीं मार रहे. उसका रीजन भी मैं आपको बोलता हूँ. देखो, देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन आवर मेटाबॉलिज्म एंड बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, ठीक है. तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो मैं बोलूंगा उसके बारे में डिटेल में निकाल के. Now just try to focus on the tetracycline mechanism. So tetracyclines binds to the 30th ribosome and interfere with the protein synthesis again. Okay. So again this tetracycline binds to the 30th ribosomes and interfere with the protein synthesis. In the attachment of amino acid transfer TRA. प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप्स होता है, उसमें अमीनो एसिड ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो अमीनो एसिड ट्रांसफर करता है, ठीक है, टू एक्सेप्टर साइड ऑफ एमआरएनए कॉम्प्लेक्स. तो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए टू एक्सेप्टर साइड. सो tetracyclines will bind to 30th ribosome and interfere with the protein synthesis by blocking the attachment of amino acid transfer RNA to the acceptor side of mRNA. अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है अगर तो इसमें समझ में आएगा. Tetracycline forms chelate with the calcium, magnesium ions, which are essential functional integrity of the enzyme. Bacteria, ribosome of bacteria. मतलब it has a dual action. First, a tetracycline will bind to 30th ribosome and they will invade the protein synthesis. Again, tetracycline will form a complex with the these ions, calcium and magnesium ions of bacteria, not even a bacteria के. बैक्टीरिया के आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और उसको अवेलेबिलिटी कम करेगा. तो वो आयंस अगर अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया मर जाएगा. वो एक साइड पे आयंस अवेलेबल नहीं कर रहा है, दूसरे साइड पे क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर रहा है. सो बैक्टीरिया विल डाई. So resistant to tetracycline develops and passes through transfer of plasmid factor R factor that contain a genetic information for development of resistance. मतलब अगर एक बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट डेवलप हो गया वो बैक्टीरिया क्या करेगा, दूसरे बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट दे देगा. वो मतलब उनका जो वही होता है ना, absorption, distribution, metabolism and elimination of tetracyclines. So absorption is variable from intestine.
they are destroyed, they are not destroyed from, they are not destroyed by gastric acid. मतलब यहाँ पे gastric acid में ये destroy नहीं होगी, जैसे पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे अमोनो ग्लाइकोसाइड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना. तो टेट्रासाइक्लिन्स will not destroyed by gastric acid or intestinal flora. Now tetracyclines form insoluble complexes with the insoluble complexes by chelation with the calcium, magnesium, aluminum ions which are not soluble and they are poorly absorbed. मतलब अगर आप टेट्रासाइक्लिन का टैबलेट ले रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन का कुछ कैप्सूल ले रहे हैं, वैसे तो ये टैबलेट में नहीं अवेलेबल, कैप्सूल में होता है टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल इस में. तो ये जो टेट्रासाइक्लिन्स है, दे विल कंबाइन विद द कैल्शियम, मैग्नीशियम, aluminium, iron, these kind of metals, they will form a complex with them, and these complexes are relatively less soluble and are not absorbable. मतलब अगर आपने टेट्रासाइक्लिन का टैबलेट और एंटासिड प्रिपरेशन साथ में लिया, या फिर आपने दूध के साथ लिया, जो दूध में का कैल्शियम है उसके साथ में टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और वो कॉम्प्लेक्स एब्सॉर्ब नहीं होगा. मतलब क्या होगा, अगर आप टेट्रासाइक्लिन का टैबलेट इनके साथ लेते हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कैल्शियम किस में होता है, दूध में होता है, ठीक है. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम किस में होता है, आपके एंटासिड में होता है, ठीक है. So antacid preparation and milk preparation, if taken together with the tetracyclines, so tetracyclines effectiveness will be decreased. So tetracyclines will not be available biologically, ठीक है, उसका बायोअबिलिटी कम होगा. So they will be ineffective. That's why these antacids, so milk product and antacids will reduce the absorption of tetracyclines, and ingestion of food and iron also interfere with the absorption of tetracyclines. Now, tetracyclines are distributed in the various body fluids like penicillins. They are concentrated in the bile, liver, bones, enamel of teeth, erupted teeth, and lungs. They can cross blood-brain barriers, secreted in the milk, metabolized in the liver, and excreted in the urine. ठीक है. Tetracycline should not be administered by intrathecally. मतलब स्पाइनल जो निडल होता है, स्पाइनल निडल, सो इंट्रास्पाइनल एडमिट यूज नहीं करना. Tetracycline should never be administered by intrathecally. Tetracyclines C पर undergo, जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था कार्बन नंबर 4 पे, they will undergo epimerization. Tetracyclines undergo epimerization at pH 2 to 6 at C4 position of the structure in acidic medium, and they form epimers called as 4 epi tetracycline. So epi tetracyclines are formed by epimerization of tetracyclines. जो epi tetracycline है, C4 epi tetracyclines, they are formed by epimerization of tetracycline in the acidic pH 2 to 6 pH, ठीक है. And these epi tetracyclines are inactive. These epi tetracyclines are inactive. A degradation product as well as result of dehydration in acidic medium. डिग्रेडेशन होता है और डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट होता है एसिडिक मीडियम में, कौन सा है, 4 epi tetracyclines. It is a nephrotoxic. Actually, it is a metabolic part of the tetracycline. Now, in the basic medium, tetracyclines will form inactive isotetracyclines. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इपिमराइजेशन कहाँ होगा. देखो, टेट्रासाइक्लिन का इपिमराइजेशन होता है एसिडिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम में pH 2 to 6 अगर है, वहाँ पे इपिमराइजेशन होगा, epi-tetracycline formation होगा, which are inactive. Then now, in basic medium, tetracyclines will form inactive isotetracyclines, which will not form the complexes with the metals. मतलब tetracycline जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स हो रहा था, आइसोटेट्रासाइक्लिन क्या है, होता है, बनता है बेसिक मीडियम में, लेकिन वो फॉर्म नहीं करता कॉम्प्लेक्स कि कार्बन नंबर 11 12 उसका ब्लॉक हो जाता है आइसोटेट्रासाइक्लिन का, ब्लॉक्ड एंड नॉट अवेलेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो इतना याद रखो कि बेसिक मीडियम में आइसोटेट्रासाइक्लिन बनता है टेट्रासाइक्लिन का, और एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, ईपी टेट्रासाइक्लिन. याद रखो, इपिमराइजेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन takes place in the acidic medium, and isomerization of tetracycline will take place in the basic medium. So EP tetracyclines will be formed in the acidic medium, isotetracycline will be formed in the basic medium, and both are inactive. Now semi-synthetic tetracyclines. So they are classified as short acting, intermediate acting, and long acting. Short acting like tetracycline, oxytetracycline. Intermediate acting like democycline, demo, demo, deme, demecycline, then methacycline.
देन लॉन्ग एक्टिंग डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन। तो लॉन्ग एक्टिंग जो है वो याद रखो आप, इसके बारे में कभी कभी पूछ सकता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन दीज आर द long acting tetracyclines. Methyl chlorotetracycline. Absence of methyl group from tetracycline, that is known as a desmethyl. Sorry, dimethyl. Desmethyl chlorotetracycline. So absence of methyl group, that is a desmethyl. Okay. Adosific are the same. Limecycline. Limecycline is the combination of tetracycline plus amino acid lysine. So it is a newly developed drug, lamicycline. Lamicycline is a combination of tetracycline plus amino acid lysine to increase the stability and solubility. Doxycycline, long-acting, better absorption, higher lipid solubility, elimination is independent of renal function and less probability to cause diarrhea. Is the advantages of toxicity over the tetracycline. मतलब जो बाकी tetracycline है उससे ये अच्छा है doxycycline. Tolerate भी ज़्यादा अच्छा होता है. और next one is minocycline. It is a more spectrum than all over the other tetracycline. ये सबसे ज़्यादा broad spectrum tetracycline है amongst the family. ठीक है? It is a broad amongst the family. Less prone to cause azotemia as a vestibular toxicity in addition to other tetracyclines. Then oral hyperpigmentation, autoimmune hepatitis, systematic lupus. बाकी कुछ नहीं, इतना है, इसमें इतना याद रखो. Adverse reactions of tetracyclines. So first, allergy. So you will have a photosensitivity marked erythema. मतलब tetracycline अगर लेंगे और धूप में जाएंगे तो आपके स्किन के ऊपर रिएक्शंस हो सकते हैं. So photosensitivity reactions like erythema, skin rashes, brown black discoloration of nails. आपके नाखून ब्राउन या ब्लैक होंगे. लूजनिंग येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ. आपकी जो टीथ है वो येलो होंगे टेट्रासाइक्लिन अगर लेंगे आप तो, बिकॉज दे combines with the calcium ions of your iron calcium ions of your teeth, and they will form a complex. The complex is nothing but the yellow color. There is a deposition of complex on the teeth, that's why there is yellow coloration of teeth. Then GIT, gastrointestinal tract में क्या होगा? Nausea, vomiting, diarrhea, epigastric distress. In super infection with Candida albicans. अगर टेट्रासाइक्लिन के ट्रीटमेंट लिया आपने, क्लियर हो गया आपका, बंद किया, तो उसमें आपको सुपर इन्फेक्शन हो सकता है. यू विल बिकम मोर प्रोन टू द कैंडिया अल्बिकस. कैंडिया अल्बिकस आपको इमीडिएटली ये करेंगे, कैच करेंगे. ब्लैक हेयरी टंग. आपका जो ब्लैक हेयरी टंग मतलब क्या, टंग के ऊपर आपको एक ब्लैक ब्लैक हेयर जैसे इरप्शंस आएंगे. दैट इज नथिंग बट द फंगल इन्फेक्शन. इन्फेक्शिया वाल्वा जो लेडीज में होता है. देन निस्टेटिन हेमाइसिन कैन रिलीव दिस सिम्टम. अगर ये सब हो गया तो आपको निस्टेटिन और हेमाइसिन, दीज आर द एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स. निस्टेटिन ये यूज करना है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है. सुपर इन्फेक्शन इज ऑल्सो विद द क्लोस्ट्रिडियम डिफिकली एसाउरिस. मतलब सुपर इन्फेक्शन सिर्फ आपको इसका ही नहीं, इसका खतरा नहीं है कैंडिया अल्बिकस, इसका भी है. An anti-anabolic effect because they are protein synthesis inhibitor may result in the anti-anabolic effect which cause increased excretion of urinary nitrogen and certain amino acids during weight loss. तो anti-anabolic effect भी है. लीवर के ऊपर भी एडोसिविट है. लीवर डिसफंक्शन, पैंक्रियाटिस, जॉन्डिस, एसिडोसिस एंड हाइपरकैल्सीमिया. और these एक यहाँ पे बाकी है. all the tetracyclines they are teratogenic in the nature. Teratogen है. ठीक है. Next is teratogenicity. So tetracycline should be avoided in the pregnancy in the interest of both mothers and fetus. मतलब अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उसमें टेट्रासाइक्लिन यूज नहीं करना है क्योंकि दे आर टेराटोजेनिक, बिकॉज दे विल बाइंड टू द कैल्शियम एंड दे विल इंटरफेयर विद द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. ठीक है. टीथ एंड बोन्स. टेट्रासाइक्लिन विल फॉर्म चिलेशन. टेट्रासाइक्लिन ऑर्थोफॉस्फेट. मतलब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन क्या करेंगे, आपके टीथ के ऊपर और बोन्स का जो कैल्शियम है उसको बाइंड करेंगे, ऑर्थोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. टेट्रासाइक्लिन ऑर्थोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स. There is a by deposited in the area as calcification in the bones and teeth. ये डिपॉजिट हो जाएगी कैल्शियम की जगह है. कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन ऑर्थोफॉस्फेट वो डिपॉजिट होगी कैल्शियम की बजाय, तो वहाँ पे येलो कलरेशन होगा. Growing of teeth in the infants and if taken by pregnant woman. अगर प्रेग्नेंट वुमन ने अगर टेट्रासाइक्लिन लिया तो उसका बच्चा जो है वो उसके दांत पीले हो जाएंगे.
effective formation of enamel of teeth, permanent pigmentation of teeth, and increase in the chance of dental caries in the children. किडनी में क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट अजोटोमिया, एजोटीमिया एंड एनाबॉलिक इफेक्ट इज रिवर्सिबल। अजोटोमिया मतलब अजोटीमिया मतलब जो नाइट्रोजन होता है उसका absence। Fanconi like syndrome characterized by nausea, vomiting, proteinuria, glycosuria, acidosis, amino acid urea. There is because of tetracycline. This is because of outdated tetracycline capsule and attributed to degradation product of Epi hydrotetracycline। अभी देखो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। Fanconi syndrome is caused by और Fanconi syndrome is adverse effect of। सो टेट्रासाइक्लिन क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन का आपने एक कैप्सूल लिया और वो एक्सपायर्ड है, मतलब एक्सपायरी डेट के बाहर गया टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल। एक्सपायर्ड ड्रग लिया आपने तो उसमें क्या होता है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईपी हाइड्रो टेट्रासाइक्लिन। डिग्रेडेशन product of tetracycline is nothing but the Epi hydro tetracycline. Now this Epi hydro tetracycline will cause nausea, vomiting, proteinuria, glycosuria, aciduria. This is known as a Fanconi like syndrome। Fanconi like syndrome, Fanconi like syndrome जो है इसके बारे में क्वेश्चन आया था। और आपको teratogenicity may reduce the linear growth of bones if taken in the pregnancy and also get deposited in the nails, and fluorescence nails may be after the prolonged therapy should be avoided in the pregnant women and children। तो teratogenic है इसलिए। benign intracranial hypertension, इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। इंट्राक्रैनियल मतलब खोपड़ी के अंदर, आपकी जो खोपड़ी है उसके अंदर। हाइपरटेंशन मतलब प्रेशर बढ़ेगा। सम इंस्टेंसेस इंक्रीज इन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सो इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ जाए तो आपको हेडेक होता है, फोटोफोबिया होता है, आपका नोशिया होता है, वोमिटिंग होता है। इन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन मिसलेनियस एडवर्स इफेक्ट लाइक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस विद आईवी इंजेक्शन, देन जेरिश हेक्साहेमर रिएक्शन। ये जेरिश हेक्साहेमर रिएक्शन अपन ने देखा था पेनिसिलिन में। is rare peptic ulcer in uremic patient, then steroria deficiency of vitamin K prolonged therapy। देखो ये सब एडवर्स इफेक्ट है, मतलब देखो इसमें यूज की जगह एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है में, ठीक है। उसका में एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है तो इसका यूज ज्यादा होता नहीं। Similar toxicity minocycline has produced ataxia, vertigo, nystagmus। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ योर टेट्रासाइक्लिन, ये सब एडवर्स इफेक्ट देख लो। ये है एलर्जी, सुपर इन्फेक्शन, एनाबॉलिक इफेक्ट, लीवर पे क्या है, उसके बाद टेराटोजेनिसिटी है, उसके बाद टीथ पे कौन सा इफेक्ट है, किडनी में क्या है, सब सब याद होगा, ये सब बुक में दिया है, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, उसका यूज क्या करेंगे। सो रिकेट्सियल इन्फेक्शन, रिकेशिया जो होता है उसका इन्फेक्शन, वेरी इफेक्टिव इन द रिकेट्सियल इन्फेक्शन लाइक म्यून इपिडेमिक एंड टाइपस टाइपस, ये सब। क्यू फीवर और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इसके नाम है क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इसमें यूज करेंगे उसको, ठीक है। प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा निमोनिया, देन कॉलरा में ड्रग ऑफ चॉइस है टेट्रासाइक्लिन एंड करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन व्हिच इज अ मैसिव इन केस ऑफ कॉलरा। कॉलरा क्या होता है कि विब्रियो कॉलरा नाम का जो है वो इन्फेक्ट कर जाता है, और वो इन्फेक्ट करने की वजह से आपको टोटल डायरिया हो जाता है, मतलब आपने बैठ ही नहीं सकते एक जगह पे, इतना हो जाता है कि कॉलरा से आदमी नहीं मरता, कॉलरा की वजह से डायरिया हुआ है उससे आदमी मरता है, ठीक है। बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था और कोरोना का पेंडेमिक तो उसके परसेंट भी नहीं है। इन्फेक्शन लाइक ट्राकोमा, नॉन गोनोकोकल यूरोथ्राइटिस, कंजक्टिविटिस, सर्वाइटिस, एपिडेमियाइटिस। Tetracyclines are also used in the coma, then bacillary infection, brucellosis, sexually transmitted disease, urinary tract infection, acne vulgaris, plague, drug-resistant malaria, anemic dysentery, H. pylori infection, miscellaneous condition like anthrax, actinomycosis, relapsing fever, yaws, and in the tropical sprue and blind loop syndrome।